अथ सप्तलोके दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यन्नतः। देव्युवाच श्रुतिदेवी प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं माया तथैव स्नोपप्या स्तुति च प्रकाश्यते। अस्य श्रीसप्तलोकी दुर्गास्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थं सप्तलोकी दुर्गापाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बालादा कृष्णमोहाया महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मिता हरसि मे सिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मिता मतिमति वशुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्चचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्तपवित्रायर्परायणे सर्वाश्रुति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषान्निपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलानविष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायां हृतां प्रयन्ति। सर्वाबाधा प्रशमानं त्रयीसुलाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशिनीम्। श्रीदुर्गाष्टोत्तर शिव उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि ऋषृण्य कमलानने अस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति। स ॐ सती साध्वी भवा प्रीता भवानी भवमोचनी। अर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चन्द्रघण्टा महातपः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्रूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्या सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावनी भव्या 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 सदागति शम्भवी देवमाता च चित्नारत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावटी पाटाम्बरपरिधाना कमञ्जनी अमेया विक्रमाकूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी नवदुर्गा च मातङ्गी मातङ्गा पुनिपूजिता ब्रह्मी माहेश्वरी चन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमृत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भशुभहननी महिषासुरमर्दनी मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्ववस्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकस्तस्य हस्ता च अनेकस्तस्य धारिणी कौमारी चैककन्या च कैशोरी युवतीयती अपौढा चैव पौढा च वृद्धिमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदे पठे नित्यं दुर्गा नाम च चष्टकं नासध्यं विद्यते देवी त्रिलोकेश पार्वती धनं धान्यं सुतं जयं हयं हस्ति नमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभने मुक्ति शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु धत्वा देवी सुरेश्वरीं पूजयेता परा भक्त्या नमेतामेष्टचष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेर्वेदा देवैः सर्वैः सुरैरपि राजानो दासतं यन्ति राजमिश्वासवाप्नुयात् गोरोचनललक्तनकुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रेण विलेख्ययन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारी भौमस्य निशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्यं प्रापठे स्तोत्रं या पठे सम्पदां पदम्। अथ देव्याः कवचम् ओमस्तु श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यशो मातरो बीजं दिग्बन्धदेवता सत्त्वं श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः।
ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डे उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् अन्यकस्यचिदाख्यात्मक तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पूर्णं तच्छृणु महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च शततं कालरात्रि च महागौरी च षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उत्तैते तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दशनमासत्तु सत्तु मध्ये गते रणे विषये मे दुर्गमे चैवा भार्यतः शरणं गता। नातेखां जायते किञ्चित् नाशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। अस्तु भक्त्या स्मृता नूनां तेषां वृद्धि प्रजायते एतं स्मरन्ति देवेशि रक्षते सन्न संशया। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसंहारूढा वैष्णवी गरुडासना महेश्वरी वृखारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्तहरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृखवाहना ब्रह्मी हंस समारूढ़ा सर्वभारणभूषिता। इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नो वशोभिता। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्या क्रोधा समाकुला शङ्खं चक्रं गदं शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च संगमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधितानां देवानां च हिताय वै। नमस्तस्तु महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साये महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि तच्छेषु शत्रूणां भयवर्धनि। प्राच्यं रक्षतु मामग्नि अग्निनामग्निदेवता दक्षिणे वा तु वाराहि नैऋत्यं खड्गधारिणि प्रतीच्यं वारिणि रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनि उदिच्यं पातु कौमारी ऐशन्यं शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेस्तथा वैष्णवी तथा। एवं 10 दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठिता आर्जिता वाम पर्षेतु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्धेतनी रक्षेद्रुमामूर्धन् व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेदयश्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुको मध्ये त्रयोलोक्ते श्रवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूढे तु शङ्करी नासिकायं सुगन्धा च उत्तरेष्टे च चार्च च अधरे चामृतं कालं जिह्वं च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टानां त्रिघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षीं चेबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नालिकं नलकूवरी स्वाखण्ड्यो खड्गनी रक्षेद्बाहु मे वज्रधारिणी हस्त्र्यो दण्डनी रक्षेदम्बिका चङ्गुलीषु च नाखाच्छूलेश्वरी रक्षेत्कुच्छो रक्षे कुलेश्वरी अस्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्योश्वरी तथा पूतानां कामिका मेढं मुग्देव महिषावाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जुनिन् विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्फो यो नारसिंही च वादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गलेषु रक्षेति पादलेष्टे नवासिनी नखान् दृष्टन् कराली च केशशोभ्वान्केशनी रोमकोपेषु कौवेरी त्वाचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जासमन्य मे स्थिति पादपार्वती अन्त्राणी कालरात्रि च पित्यं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशो कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मेधा सर्वसन्दिनी शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायं छात्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धि रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानामुदानां का समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च सद्वेशस्य च योगिनी शक्तं रक्षास मे शैवा रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति लक्ष्मीश्च धनं विद्या च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् वसून्
मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भ्रय रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपथा रक्षेन् रामार्गक्षेमग्रीस्तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वस्य स्थिता रक्षहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्तीं पापनाशिनी पादमेकेन गच्छेतु यदि यच्छेत् महात्मना कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्या विजया सर्वकामिकः यं यं चिन्तते कं कं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् पारमेमाशतूलं ता प्राशत्ये भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्या संग्रमे स्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवत्पूज्या कवचेनामृतः पुमान् इदं तु दिव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं या पठे काप्रतिं देवं सर्वदेवानि निष्ठया जीवेदं वा शतं संग्रामृत्युमृत्युभिवर्जिता न्यासन्ति व्याधया सर्वे तुलाविस्फोटकादया अस्थावरं जजङ्घं चात्रैव गत्रीगराचरीम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचरस्यैव जलजास्रोपदोषिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तारिश्चा च घोरश्चा डाकिन्यश्च महाबला ग्राभूतपिचासस्या यथा गन्धर्वराक्षसा ब्रह्मा राक्षसप्रेताला कुष्माण्डा भैरवादया नाशन्ति दर्शना तस्या कवचे हृदि संसिते मनोनाति प्रवोत्राज्ञा तेजोदे तीव्रापरं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले सप्तशतीं चण्डीकृत्वा तु कवचं देवता पुरा याद्वतं देवदेवानां सर्वदेवानि कानकं ततिष्ठन्ति मेदिन्यं सत्यपुत्र द्रपौत्रकी देहन्ते परमस्थानं यस्तुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। अथ कीलकम् ओमस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे च विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्रमितनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतज्जनीयन्दा मन्त्रमाभिर्बालिकां सोऽपि सोपाप्नतो सत्यं सात्यते सत्यसत्परा सिद्धया तु सदा देनी वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुता देवी स्तोत्रमन्त्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकां संग्रामे सिद्ध्यति यन्ति लोकसङ्कीर्तुताहरा कित्वानि मन्त्रमास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायस्तु तच्च गुप्तं चकारसा समाधिनानं पुण्यस्य तं यथा निवाडनां सोऽपि सोप्नातु सर्वमेवं नातिदेन निशंसया किश्लायां वा चतुर्दश्यामष्ट्यां वा समाहितानुसन्धिता ददाति प्रतिगृह्णाति अन्यदेक प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलतं यो निष्कीलं विधायेनं नित्यं सम्पति सम्पुटं सा सिद्ध्या सा गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न सोऽप्यात्वरा तस्य भयं क्वापि जायते नाम मृत्युवशः याति मृत्युः सोऽपाप्नुयात् गित्वा पारभ्य कुर्वीत न कृणो न विनेष्यति ततो ज्ञातैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य बुधै सौभ्याज्ञायाति किञ्चिन्द दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन सम्प्यमिदं शुभं सैन्यस्तु जप्यनेशस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्चिकैः भवेत्येव समग्रापि ततः पारभ्य तत यश्चर्यं यत्प्रसादेन सौभारोग्यारिसम्पदा शत्रुहानि परो मोक्ष स्तुने साकितावितैः। अथ अर्गलास्तोत्रम् ओमस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषिनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बापीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे च विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते जय त्वं चामुण्डे विच्चे जय भूतार्थहारिणी
जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकैटविद्राचा विविर्दार्ते वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिराळक्षे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भशैव निशुम्भस्य धूम्रच्छस्य च मर्दनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वतीन्द्रागी युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यारूपचरिते च सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अस्तु अभ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं व्यत्वा मार्चितीत्या भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि द्वेषितं नाशं विदेहि बलमुच्यकै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्ना नृगाघश्चरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावान्तं यशस्वान्तं लक्ष्मीवान्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यत्रापघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्ता संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्कृते देवी सत्सशक्त सदात्मिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुतनाथा संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपति भद्वा पूजितो परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्डदोदण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोतम्ब तन्ददन्द्योतताम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारः सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरा सा तु सप्सा सती सख्या वरप्राप्नोति सम्पदाम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ॐ प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिरत्तान्दिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्य रूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् छोलम्बुसुण्डीं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतं नीलस्मद्दुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामास्तस्य पितेहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डे उवाच शावर्णिः सूर्यतनयो यो मनु कथ इष्टमः निशामयं तदुत्पत्तिं विसदादगदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपा सा भावुआ महाभागा सावर्णिस्तनवेरभे सौरोचिकन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवा सूरथो नाम राजा वत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालायतः अस्माका प्रजापुत्रनिमैरशान् भावुशात्रवो भूपा कोलाबिन्ध्यासिनस्तदा तस्य तैरभवति युद्धामति प्रबलदण्डिनः न्यूनरैपैवतैर्युद्धे कोलाबिन्ध्यासिविर्जितः तथा सा पुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आकृता सा महाभागा प्रभस्ते प्रबलार्भिः अमर्त्यैवले दुर्वृत्तस्य दुरातिथ्या दुरात्मिभिः कोशो बलं चाहृतं तत्रावि सा पुरोहुतत् ततो मृगभ्यहेजेन हवतः शम्या भूपति एकाकी हायमारुष्या जागहं गहनं वनं सा तत्रामसीच्छेदं द्विजावश्यानमेधसा प्रशान्तशापदाकीनं मुनिशिष्यो वशोभितं तस्थौ काली कलालं च तेन वेन सदा कृता
उद्धरो चावितं देवं सर्वकार्यार्थसेवता इचस्ते सर्पिरस्सन्त्रासरासिन्ना वनाश्रमे शोचिन्त्यदयतावात्रामत्र किश्चन्न चेतना मत्पूर्वं फलितं पूर्वं मायाहीनं पुराहि तद् मदवृत्तैः स्वाश्रितां सोल्वेतां प्रसान ना जाने चा प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरीयसा यातान् कान् भोगान्नुलाश्यते येन मामून्गतं नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्तिं धुवद्या मे ग्रहभृत्या विवावृतम् असम्यासाशिलज्जिद्ये कुर्वद्दिं सततं वयं सच्चितासोति दुःखेन छायं गोषो गमिष्यति एतत्ते च सतत्पित्रं त्रियामायास पार्थिवा तत्र विप्राश्रमे स्वेकं पैश्वमेकं ददर्श सा पृष्ठेन कस्वत्तं भोयेत्तु गमनेत्रका सशोक इव कस्मत्तम् इमान इव लक्ष्यसे इत्यकल्लावचस्तस्या भूपते प्रणयोदितं प्रात्तिवाचा सतं वैश्वा प्रसान्वानुवतो निपं वैश्युवाच समार्धिनामं वैश्यो हतवुत्मोधानिनं कुले पुत्रदारे निरस्तस्या धनलोभा ददामि विनिश्या धनैर्धारे पुत्ररादाय मे धनं वनेभ्याय गतो दुःखी निरतश्चन्द्रवावति सोऽहं नावेदि पुत्राणं कुशला कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वासजानां च दारुणं तत्र संसिता केनु तेषां गृहे सेमं मक्षेमां कुर्णसम्प्रता कथं चेकृतान् देवान् सोमृता से सुतारुतं राजोवाच यो निरस्तो भवालुब्धो पुत्ररादामि मे धनं तेषु किं भवता स्नेहं प्रावृत्तिं देधिमानसं वैश्युवाच एवमेतत् तथा प्राह प्रसन्नवावचा किं करोमि न वर्ध्याति मम निष्ठुरतं मनः येन सज्जाते प्रत्नेहं धनलुब्धे निराकृतः प्रतिस्वाचरितहृदि शक्ते वामना किमेतन्नाभिजानामि जगन्नामपि महात्मते यत्प्रेव प्रवर्णं ता चित्तं प्रावेशवन्दुखु ते कुकीते निवश्वासो धर्ममन्नस्यन्न जायते करोमि कीयतामष्टामनिर्मिष्टिर्निष्ठुरं मार्कण्डे उवाच ततस्तौ विप्रमे देवे समुनि समुपस्थितौ समाधिनानं वैश्यसो सा च पार्थिववस्तमः कृत्वा चासा तु यन्थ्यायं यथायं तेन सम्पिदम् उपविष्टो कथायाचिन् क्रातुरो वैश्वपार्थिवो राजोवाच भगवान् वस्त्रवृक्षामि कृपत्यस्याततौ दुःखायन मे मनसा साचयात्यनापना मत्वागतराजस्यारङ्गवे सन्धवेऽपि जानतोऽपि यथज्ञासा किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निर्कृतः पुत्रे दत्तराया निसञ्चिता स्वाजनेन सुरक्तेन हृदि तत्निवेशता एवमेषं तथायं च दृगादिष्टन्ददेवसो दृष्टोऽपि विषये च मर्त्वा कृत्वेन सेवितम् ज्ञानमस्ति समस्सन्त्याजन्तर्विशेषगोचरे विषयश्च महाभागं यथा चैव पृथक् पृथक् दिवन्धा पाणिना केचित् तथा देवा तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ पडिन्तुल्यान् दृष्ट्यः गानिजो मनुजं सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि गानिजा सर्वे प्रसूपाक्षी मृगादया ज्ञानं च तन्मनुष्याणामभिशोभितं मोहितौ द्रादेशं धर्मदेवानुसन्निधा आवं जायिनि यत्पूर्वे सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच इत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रतावृता यत्ता चक्षेण वैच्छिन्नी जघ्ने सङ्घर्षेशतयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा संसुता स्वयं प्रभामश्च देव्या ते सुनं भेजुहिताति इति मार्कण्डे पुराणे शाम्बरिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमोऽध्यायः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकाम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजम् आयुस्तत्त्वम् यजुर्वेदस्य रूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रपाठे विनियोगः। अक्षस्त्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नानहं सेवे शैरभिमर्दनीमियमहां लक्ष्मीं सरोजिस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरम्भुसो युद्धं पूर्णशब्दं शतं पुरा महिषासुराणमाधीपे देवानां च पुरन्दरे तत्र सूर्यै महावीर्यं देवशन्नं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निद्रोभुन्महिषासुरा ततः पराजिताः देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतस्तत्र यत्र ते गरुडध्वजौ यथावृतं चतुर्द्वैतं महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः काथयामासं कश्च देवा न विस्तरा सूरेन्द्रवाग्नादिश्च वरुणस्य च अन्येखां चाधिकरन्तैव श्याममेवाधितिष्ठति
सर्गन्निर्कृता सर्वे तेन देवगणामुभिः विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेषेण दुरात्मना एततः कथितं सर्वा ममारीचेन चेष्टितं शरणं वा प्रसन्नास्मो वधस्तस्य न चिन्तयम् इत्थं निशम्य देवानां वाञ्छसि मधुसूदनः चकारकोपशुम्भुश्च भृगुटिकुटिलादनौ ततोऽतिकोर्णपुण्डस्य चक्रिणो बन्धदन्तितः निष्कामा महत्तेजो ब्राह्मणा शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां सकृदीनं शरीरतः निर्गतं प्रोवितं देवं त्रैलोक्यं सा समक्षतः अतीव तेजसा क्रूटं ज्वालामीरुवपार्वतं दादुदुष्टे गजतस्सा ज्वालाव्यप्तदिगन्तरम् अतुला तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तत् भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं दिखा यतवोक्षा भयं तेजो दापितं तानिषन्मुखं सौम्येन सा भवन्केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन हस्तयो युग्मं मध्यचन्द्रेण चाभवत् वरुणेन जगद्घोरो नितं तेजस्ना भुवा ब्राह्मणा तेजसा पादौ तन्निर्लेखन्तेजसा पशूनां चाकरुङ्गाल्या कौबेरं च नासिका नन्तस्तु दन्ततं पूजा प्रजापत्येन तेजसा नियन्त्री जज्ञया यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवोचासन्दयो तेजा श्रवणवनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां शम्भुतेजससा शिवा तथा समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां त्रम्बिलोक्यामुदं प्राप्नुमावृतं महिषार्दितः शूलं विनिष्कृष्य तदौ तस्य पिनार्धिका चक्रं चादग्धवान् कृष्णदेवानिशकृता शङ्खं च वरुणासक्ति तदौ तस्य हुताशना मरुतो तापवश्चापं वाणवाणी पुरेष्वती वज्रमिन्द्रासमुत्पद्य कुशलासां दिवावृतः तदौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामैरदिगाजितः कालदण्डाडमोदण्डा पाशसामृप्रजापतिं प्रजापतिश्चमालं च ततौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकोपेश निरञ्जेन दिवाकरः कालश्चादत्तवन् खड्गं तस्य शर्माज निर्मलं क्षीरो देवात्पतं नारमाजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रा तथा शुभ्रं केयूराजमुनाकृतं नूपुरो विमलो तद्वा तैलोक्यासा निर्वृत्तमम् अङ्गलीकाक्रवत्नानि समस्तेवान् शङ्किता विश्वकर्मा तदौ तस्य परशुं जाति निर्मलम् अष्टनेकाशरूपाणि तथा मेष्टानिदर्शनम् पाङ्गलिषेन्मालिंसा श्रीददासेदचापरा अदञ्जीला तदैतस्य पङ्कजं जाति शोभनं हिमवानं वाहनं च सिंहरत्नाभिधानि च तदा वासोन्नसूरया पानपात्रं धनाधिपा शेषस्सा सर्वनागेशो महावाणी विभूषितं नागहारं तदौ तस्य धत्ते च पृथिवीमिमम् अन्यनैरपि सुरैर्देव्यै पुन्तदेवार्चता तथा समानीतः नगादोचैः षण्डहासं मुहुर्मुहुर्तश्च नादेन घौरेणा कृतान्तिपूरितं नभा अमायन्ता महतं च प्रतिशब्दो महामृतं चुक्षुभु सकलालोका समृद्धा चकाम्बिरे चाचला वासुधाशेलु सकलस्य महीधरा जायति देवश्च मुदा तामुष्यवाहिनी अङ्गवामेशता देवं सिंहदेवानुसंगिता हतस्ते सा तथा देवं सर्वदेवानुसंगिता नूपुरो वोमुलो देवं सर्वदेवानिसंजिता जुजोबुश्च सहस्रेणा सबन्तापनिशंसिता ततः प्रवर्वतो युद्धं तया देवानिषद्वितं सहस्रेमृतं देवं रक्तदेवं दिगन्तरं महिषासुरसेनानि शूराक्षोषा महाशुरा योदर्विडालावितानां च गङ्गदेवानिसंगिता वृतोराथानकौट्यं च युद्धोषां विडालाख्यो युतानां च पञ्चशद्भिरावृतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च सत्रयोधुषो रथनागा वहिवृतः अयुधु संयुगो देव्या सा तत्र च महाशुरा कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिना तथा हयानां च वृतो युद्धं तत्र भुन्महिषासुरा कौमरो प्रिन्दिपालिश्च शक्तिविन्धासथा तथै युधु संयुगो देव्या खड्गै परशुपाटिशै केचिज्जचिपिपाशक्ति केशद्यान्द्रे तथा परे देवी खड्गप्रहारेस्तु ते हन्तुं पाचक्रकमौ स्थापितेऽपि सहस्रेण शक्तन्ते न संगिता हेतश्चानै महादेवं सर्वदेवानिसंगिता उतरो वोमरो देवं सर्वदेवानिसंगिता मुमोचसुरदेवेषु शस्त्राणि च सरेश्वरी चोऽपि क्रुद्धो सुतासाटो दिव्यावाहनकेसरी चाचुरासुरसैन्येषु हनेनिश्च हुताशना निःश्वानामुमचो यश्च युद्धमाना ऋणिम्बिका सा एव सद्यसम्पूर्णा गढशान्तिसहस्रशा योधुतस्ते समद्दिश्यं त्रालिसीदा निपाटिशै नाशयन्तो सुरगणान् देवीशक्तिं नवृहृता मृदयिता तथैवन्ये तस्मिन् युद्धे महोशये
देवी देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिविष्टिभिः खड्गदेवीश्च हतश्रोता निजघान महासुरान् पातयामास चैकन्या घण्टास्वान्यमिहोहिता असुरान् भुवाभूमि प्रासदेवा निषङ्गिता केचिद्दिवा तथा रात्रौ मर्यान्तुल्यनदिष्टया श्रींसन्तु प्रेतुमादिद्ये मध्ये विदारितारिता एकद्देवा सता देवं धर्मदेवानुषङ्गिता कबन्धायुधदो दिव्या गृहीतामरमाहृदा नानितश्च परे तत्र युद्धो सूर्यतलाश्रिता कबन्धा शिरसा खड्ग शक्तिविष्टा निपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्मे महिषासुरा पातितो रथनागश्च शरैस्तेव वसुन्धरा अगम्या सा भव तत्र यत्र भूस्महारिणः सोणितौघा महानाद्यः सर्गतश्चारवृष्टुभु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां छडेन तन्महाशन्यामसूडां तथाम्बिका निन्ये क्षयं च तार्गृतं भग्निजातिर्वस्त्रितं सा च सिंहो महानादा विदन्ति कदकेशरा शरीरेभ्यो मराणीवा मशानीम विचन्वती दिव्या गणेश्य चातस्थं क्रुद्धं युद्धो महासुरै अथेकांशो ततो दिव्या पुष्टविष्टमुद्भावति ओमिति मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः। ओमुद्यतभानुसहस्रकान्तिमरुणां क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं घनात्वविलससीतां सुतुल्यप्रभं देवी बद्धहिमांसमुत्नुरगितां वन्दे रवेन्दिष्ठिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यं मैलोक्या महासुरा सेनानी चेच्छुराकोपादिरोग्यतन तथाम्बिकां सा देवी सर्ववर्षेराववर्षे समरासुरः यथा मेरुगृहे सिंहं तोयवर्षोणतो यदः तस्तसित्वा ततो देवी लीलैव शरोत्करान् जघानतुर्गणान् वैडय्ययन्त्रं जापि वाचिनां छिच्छेदा च धनुषाद्यो ध्वजं जाति समुच्छितं विविधा चैव गत्रेषु छिन्नवन्पादिपाशिगै छन्नै धन्वाभिराथो च हताशो च सुवारथी अब्धावत तं देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमत्यान खड्गेन तीक्ष्णधर्नेन मूर्धनि अजगान भुजो दिव्ये देवी बाहति वेगना तस्य खड्गो भुजं प्राप्य पफालं नृपनन्दना ततो जाग्रह शूलं च कोपदारुणलोचना हिच्छेपा च ततस्तु भद्रकालं महासुरा ज्वालजामान तेजोभिरक्तनिर्म सर्वोचिता दृष्ट्वा तदा पताच्छूलं देवी शूलमुच्यतं तच्छूलं सा दधातेन नीतं च स महासुरा हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य समूहतो अजगामा महाराजतिश्चक्रते शेषनर्दना सोऽपि निद्रापता देवं सर्वदेवा निशप्रभं भग्नशक्तिं निपातितं क्रोधाक्रोधशमन्वितः चिच्चेपा चामरःशूलं वल्लिजापप्रसन्निता तथा सिंहसमुत्पत्त्या गजगम्बान्तरे स्थिता बहुयुद्धेन युद्धे मे तनोदेशसारिणा युद्धमानौ तदौ तश्चो भक्तवानिन्महीगतौ यूधतष्टे सुरारब्धे प्रहरैदारुतदारिणैः ततो वेगात्खमुत्पत्त्या निपत्या च मृगारिणा करप्रहारेण शिरमस्या कृता देव प्रथाकृतम् उद्रगैश्चारणे दिव्या बिलार्विच्छादिभिर्जिता दन्तमुष्टितलेश्चैव कालरश्च निपातिता देवी क्रुद्धा गदापादैः सूर्ययामशिशोद्धतं वष्कालं बिन्धिपालेन वैड्यताम्रं तथान्तिकम् उग्रस्यामुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघना परमेश्वरी विडालस्यासि नाकायात् पातयामास वै शिरा दुर्धरं दुर्भुखं चोभै सैन्यरिष्टे समासितम् उद्धदेवा सता देवं सर्वदेवानुसन्निधा एवं साक्षीयमाणे तु सौसस्यन्महासुरा महिषेणास्वरूपेण त्रायामास निकापिना कश्चितुण्डप्रहारेण सुरभेशन्ति चापिना नाडगोपा सता देवं सिंहदेवानुसंगिता सिंहन्तु महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्या सूरचूर्णमहीतलः शृङ्गम्भ्या च सरोच्चभ्या शापिदा च निशापिदा शृङ्गसिंहा महेन्द्रं च खण्डं खण्डं युधार्धना सा च नीलाश्च साताशो निपतिश्च बहुचला इति कोधासमध्यश्च मातयामात्महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपाद्वादिदासे तदोत्करा सा छित्त्वा तत्र देवेश बन्धदा तेन्महासुरं त्याज्यं महिषारूपं सोऽपि वृद्धो महावृदे ततो सिंहो महोत्पायो कौपदेश तथाम्बिरा छिन्नस्थित्वा तदा पुरुषं गर्गदेवा निषन्निधा
कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निकार्तिता ततो माहासुरो भूयो महिषावपुराश्रिता तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सा चराचरं तथा कुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् आपौ पुनः पुनश्चैव जहारारुणलोचना नर्दा चासुराशोऽपि बलवीर्या मदोद्धृतः विष्णभ्या च चिक्षेपा चण्डिका प्रातिभूधरान् सा च तान् प्रहस्तेन चूडीयन्ती सरोत्करै उवाच तं महोद्धेता मुखारागकुलक्षरं दिव्योवाच गर्ज गर्ज षडं मूढामायुधमायुतमप्रहं मया त्वयि हते तत्र गजीष्वन्नस्य देवता ऋषिरुवाच एवमुक्त्या समुत्पत्त्या सारूढं च महाशुरम् आदिने कन्यकण्ठे च शूलनेव सरोत्पिदा अर्धनिष्काद ईषीदा देव्यदेवसेन संवृता अर्धनिष्कान्द एवासो युद्धमासो महाशुरा तया महाशिना देव्या शिरसित्वा निपातिता ततो हाहाकृतं सर्वं सैन्यसैन्ये नधासिता रहस्यं च परं जगमु सकलदेवतागणा दुष्टदेवासुरै देवी सहा देवा निमहर्षिभि हतो तस्मिन् जगो गन्धर्वपतयो नारदश्च गौगणा ओमिति मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। ॐ कालाभ्रब्बां कटक्षैर्गुदवैदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपालं त्रिशकमपि कार्दुहन्तीं तिनेत्रं सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गा जयख्यां त्रिदशवृतां सेवितां सिद्धिकामयि ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयासुरगणा निहते ते वीर्ये तस्मिन् दुरात्मे सुरारिबरालिदेव्या तां दुष्टुः प्रणतिनम्रधिरोधरासां वग्भिः प्रहस्यपुलुदेवमचारुदेया दिव्यायया सतमिदं सगदं च शक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूर्तमूर्त्या तामाम्बिकाखिलमखिलमहर्षिपूज्यं भक्त्या नतास्तशुभधातु शुभानिदां च यस्य प्रभावमातुलं भगवानन्तो ब्रह्महरश्च नहि वक्तुबलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभं वश्यं करोति या शेषयं सुकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये स बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनस्पभवस्य लज्जा त्वं तं नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयामि तव रूपमचित्तमेतत् किं जातिवीर्यमसुरासुगनानि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवद्वतानि सर्वेषु दिव्यसुरगेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापदोषै नागायसे हरिहरा परिपालनाय सर्वस्याखिलविदं जगदंशभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तमद्या यस्य समस्तसुरता सुमदीर्णेन तृप्ति प्रयन्ति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य तृप्तिहेतुरुच्चर्यसे त्वगवदां नविनाशिनाय नाशाय तां सम्पदा जनपदेषु धनानि तेषां यशंसि नचिता धर्मवर्गा धन्यस्य तान्वितासिदारा तेषां समद्भुता भवतीं प्रसन्ना धर्माणि देवी सकलानि सतैव कर्म प्रत्यादितः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति रततो भवति प्रसादा तैलोक्यत्रेऽपि फलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मिता हरसि मे सिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मिता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा च चित्ता एभिः स्वतैः सद्गुप्तां सुखं तथैतैः कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयन्तु मत्वेतनूनतानि विनाशि देवी दिष्टु कितुं भव भगवती प्रसन्ना सर्वासुनाभि सुखिदेन सनाति हेतु रूपं तथैमचिमतिल्यमतुल्यमानै वीर्यं च हृतुदेव पराक्रमारं वैरस्वपि प्रकटितैव दया तथेतं केनोपमा भवतु तस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्राचित्ते कृपासमरनिष्ठुरतं च दृष्ट्वा त्वामेव देवि वरदे भुवननेत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशिनेन नातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतं दिवा नृपुर्गणा भौमस्य पास्मामस्मान्दे नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन न पाहि जापज्ञाने सुरेण च प्राच्यं रक्ष प्रतीक्षा मे चण्डिके रक्ष दक्षिणे भ्रमणेन सुलतस्य उत्तरस्य तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते यानि छत्राणि घोराणि तैः रक्षन् सन्द्वा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि छत्राणि ताम्बिके करपल्लव संज्ञानि तैरस्मन्
तच्च सर्वता ऋषिरुवाच एवं सुदासुरै देवी कुसुमरन्दन्द्वाभिते अर्जिता जगद्धात्रीं तथा गन्धनुलोपिनै भक्त्या समस्तद्वित्तं मे अष्टधूपैतुधोभिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तेन सुतानिता दशगन्धर्वता देवं सर्वदेवानि चन्दं ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देव जगतोतो तथात्मना इत्येता भद्रकाली भवन्ति स्वानिपा इत्येता कथितं भूपा सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्तष्टिन्नवैश्री पुनश्चा गौरीदेहा सा समुद्धूता यथा भवत् इवधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्चतुर्णं महाख्यातं यथा कार्मिवताविते इति मार्कण्डे पुराणे श्यामणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः। ओम अस्य श्रीयुक्तचत्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यस्तस्तं सामवेदस्य रूपं श्रीमहासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताजय ददतिं घनत्वविलसच्छेतां सुतुल्यप्रभं गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं। ओं क्लीं ऋषिरुवाच पुराणशुम्भमसूरभ्यामसूरभ्या शशीपते त्रैलोक्ययज्ञभागस्य हृतामादिर्मामिर तावेव शौर्यतं द्वादं दधिकारं तथैद्वहं कौबेरे मथोयम्यं चक्रते वनुडस्य च तथैव पावनरिद्धिं च क्रक्तोद्ध्वामि च ततो देवाभिनिर्धूता भ्रष्टराजा पराजिता हृदादिदिं क्रातुभ्यं सर्वे देव निराकृता मसूरभ्या तं देवी समरन्त्या पराजितं ते अस्माकं वरो दत्तो यथा पाशस्मृताखिला भावतं नाशयिष्यामि तच्छडत्तर्वावदम् इति कृत्वा मतिदेवं निहिमाङ्क्तं नागेश्वरं जगतस्था ततो देवी विष्णुमाया तदुष्टुभो दिव्यो उवाच नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतिर्भद्रायै निहता प्रणता स्मता रुद्रायै नमो नित्यार्यै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योतिन्ये चन्द्ररूपै सुखायै सततं नमः कल्याणै प्रार्थं वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यं भूभृतं लक्ष्मै सावर्णै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिणी खत्त तथैव कृष्णायै द्रुम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरो रुद्रै नमस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दैत्यकृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्राणामाधिष्ठाने भूतानां चाखिलेषु च भूतेषु सततं तस्यै व्यक्तिदिव्यै नमो नमः नीतिरूपेण यकृत्नामेतदं व्यावृता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरै पूर्वामाधिष्ठाश्रया तथा सेवेन्द्रदीनेषु सेविता सा सेविता करोतु सा सुभाते श्रीशुभानि बद्धजापदा या सम्प्रदा शोधितं च प्रते सर्वदेवता ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती अस्तुभ्यो वा तोयुषा च अभ्यं निपनन्दना सप्रवृत्तान् सुर्नाना सुभ्रवर्ति सुहित्रका शरीरकोशस्तस्य सभ्रवेता विविच्छवा अस्तोत्रं मामि तत्क्रियते शुम्भदैत्य निराकृतै देवैः समितैः समरे निशुम्भेन परा
पराजितै शरीरकोश दत्तस्या पार्वतस्य निताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्य विनर्गतायं तो कृष्णमुपसि पार्वती कालिकेति समख्यातं हिमाचल कृताश्रया ततोऽम्बिकां परमं रूपं सुमनोहरं दर्शचन्द्रमुण्डस्य भृत्य शुम्भनिशुम्भयो तस्य शुभया सख्यातम् अतीव सुमनोहरा कातस्ते स्त्री महाराजा पाशयन्ते हिमाचल नैव दाद्रिक क्वाचिद्दातादिष्टं केनमुत्तमं ध्यायतं काप्यसो देवी गृहीतं च सुरेश्वरा स्त्रीरत्नामती स्वाङ्गे दोद्ययन्ती ध्रुवादिका सा तु तिष्ठति देवेन्द्र तं भगवान् दुष्टमहर्षि यानि रत्नानि मार्ययो गजराश्रीनिया प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि सम्प्रतं भ्रान्ति ते गृहे एरावत् समानीतो गजरत्नं पुरुन्दरा प्रजापरितकन्दस्य कवतस्सिन्भावय हिवानं हंसयुक्ता बेटिष्टं धर्वाङ्गुरे रत्नभूता विहानितं सम्भदेवानुसंगिता ओ देवा सवा देवं सर्वदेवानुसंगिता एतस्मिन् ततो देवं सर्वदेवानुसन्दिता अवलिप्तान्वतो देवं सम्प्रदेशमागृता त्रैलोक्या भवत्यष्टा शुम्भनुसंभय अन्ये कामपि देवानां सर्वदेवान् वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवा पुण्यश्लोकिता इन्द्राद्या सकला देव सदातो अनसंयुगे शुम्भदीनं कथं तेकं स्त्री प्रयसि सन्मुखं हतो देवा ततो देवं सर्वदेवानुसन्धिया सा तं गच्छा भयोद्युक्ता पाशनिशम्भयो केशकल्ला निर्धूता गैरवसा गमिष्यति दिव्योवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भ जातिवार्वण किं करोमि प्रतिज्ञा मे दानिवानुहृतं पुरा सा तं गच्छाभियुक्तं तस्य रश्मिन्मारिता तस्य तिस्वा सुरेन्द्र सा युक्तं करोतु सा इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणकरे देवी माहात्म्ये पंचमोऽध्यायः। ओम नागाधीश्वरभीष्टरां फणिफलोतं सोरुरत्नावली भस्वादे हलितं दिवाकर निभं नेतत्रयोद्भासितं मालाकुम्भकपालनीरजकरं चन्दार्धचूडां परं सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्गनिलयं पद्मावतीं चिन्तये। ओम ऋषिरुवाच इत्यकर्णावचो दिव्या साधुतोमर्षपूरिता समचष्टा समज्ञामादित्यराजयविस्तरा तस्य दूतस्य तत्कृतामकीर्तन्यसुरादिता शक्रोधा साम्रादित्यनोपदृणोल्चना विच्छिन्या बहुशीर्षिना क्रियतेन तथा परे पापौ चारुधिरं कोष्ठादन्यकं दुतकेसरा छडेना तद्बलं सर्वं छायं नीतं महात्मना तेन केसारिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना चित्वा तामस्त्रं देव्या निहतं ध्रुमलोचनं बलं चाचायितं कृष्णा देवी केसारिणा तथा तुकोपादित्यधिपति शुम्भा प्रातुस्वादरा अग्निपायसता ततो चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्ड बले पर्वे परिवारितौ तत्र गाच्छत् तथा जुद्धं सामरीत लघु केशग्वा किस्वतावदैत्यं संशयो युधि तथा शेखायुधै शूलकवत्यस्या तस्य हाताय दुष्टायं सिंहे च विनिपातिते सिंहमागम्य बद्ध्वा तो गृहीत्वं तथाम्बिकाम् इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये षष्ठोऽध्यायः। ओम नमः चण्डिकायै। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकल्पटितं शून्यवतीं श्याममालिङ्गीं नस्तैकाग्रिगं सरोजे सकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहजारावल्लवाधं रघुवती सच्चोलिकां रक्तवस्त्रं मातङ्गीं शङ्खपात्रं मधुरमद्भुतं चित्रकोद्भासिलालम्। ओम ऋषिरुवाच अज्ञतस्ते ततो दैत्या चण्डपुण्डपुरोगमः चतुरङ्गपलोपेता सन्ददुष्टाविवाविदा आदिदुष्टो ततो देवी मिषुद्वासं व्यवस्थितां सिंहस्य परिशैलेन्द्रे सिंहमाहति कञ्चने ते दृष्ट्वा तं समुद्धातु मोद्यं चक्रुरुद्यतः आकृष्टा च पृथिरस्ते तथैन्ये सतिमाविता ततः कोपाचकारो च चुवेदनसना प्रति कोपेन च शतं वदनं महिमर्डं भूतरा भृगुटिकुटिला तस्या ललाट फलकादृतं कालीकरालवदना निश्चितकान्तसुचासिनी विचित्र खटवंगधारा नाना महद्भूषण द्विपी चर्मा परिधाना शुक्रराहति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्न रक्त नयना नादवासिन मामुका सावेगेनाभिपातिता घातयन्तीं महासुरा सन्ने तत्र सुरारीणा मशिजिह्वा तथा बलम् रो देवा ततो देवं संगदेवानुसंगिता पाशिगह्या कुशाग्रायो या घंटा च समान्विता समादाहिक हस्तेना मुखे चिच्चेपवारणा तथैव चोग्रे रथान्न शरीरासता निशिम्या वक्त्रे दष्टे शिवस्य दयित्व भैरवम् एवं जाग्रम किस्यको ग्रीवायं साधिशापरम् आदेन कम्य सुरातेमा सुवैतिन्तावता तै मुक्तानि शस्त्राणि सहस्राणि तथा सुरै मुखेन जाग्रहारुषा दशा दिशिन्नाप्रति बलीनां तद्बलं सर्वमसूरां दुरात्मनां ममर्दा वाचेन्द्र
संज्ञकवतस्सिन्भाविता असीना निहता केचित् तथा कुङ्कन्प्रभाविता जघोमिन्दस्मासुरा तन्त्रदग्धनभिस्तथा छलेन तद्बलं सर्वमसूरान् निपातितं दृष्ट्वा चन्दोऽभिवद्रुहा तं कालीमतिभीषणं सर्ववर्षे महावीरा भीमाक्षिन्तं महासुरा साधयामास चक्रश्च मुण्डशिक्षोर्हास्त्रसा तानि शस्त्राणि विश्वानि सन्नमुखस्तन्मुखम् अबुर्ध्यानानि बिभ्यानि सहुदानि घनोदरं ततो जाह सतीरुषा भीमं भैरववादिनी काली करालवक्त्रा दुरसा जातजड्बला उत्थाय सहसी देवी कलशं गृहीत्वा चस्य देवेशो कवस्यन्न स्वामिता अथ मुण्डोभ्य द्वावत्तं दृष्ट्वा चण्डनिपातितं तादिष्टो स चतो देवं खड्गविहत्यारुखा हते तेषां तथा सन्ध्या दृष्ट्वा चण्डनिपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो वेजे महायातुरं धीरस्या काली च गृहीत्वा पुण्डमेव च प्राह चण्डसुमिदाजगवत्यश्चिन्न चण्डिका माया तवक्त्रपाहत्तो चण्डमुण्डो महावसु यद्धोग्ये स्वयं शुम्भानि शुम्भं चाहनिष्यसि ऋषिरुवाच तवानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डमहासुरो उवाच काली कल्याणी ललिता चण्डिका वचः अस्मा चण्डा च मुण्डं च गृहीत्तं चान्दुवागृता चामुण्डेति ततो लोके ज्ञातदेतं भविष्यति इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मे सप्तमोऽध्यायः। ओम अरुणाङ्करुणातराङ्गताक्षिं घृतपाशाङ्गुरुवाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतं मयूखैरहमित्तविभावे भवानीम् ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च छन्देषु सहिते सरेश्वरा तथा कोपापराधीना चेतः शुम्भ प्रतापवान् उद्योग्यं सर्वसंज्ञानां दैत्यनामादिदेशः अद्य सर्वान् बलै दैत्या खटशिषि दुवागुगा कवूनां साकृतं देवा स्वादवैलीद्वावृता कोटिवीर्याणि पञ्चशदा सुराणां कल्त्रभागितं शतकूलानि ध्रुवमाणं निर्गञ्चं तो समाज्ञया कालिकादोषतामर्या कला तेजः तथा सुरा युद्धया सज्जा निहन्तुं यज्ञया तारितं मम इतो गङ्गासुता प्रातो शुम्भा भैरवसुवासना निर्गमकृतासन्नं कवते सन्भावृता अयन्तं चण्डिकादिष्ट्वा तत्सन्न्यं महावितं सौन्नष्टिपुरामासाधरणि गगन्त्रं तासिंहो महानादामतीवा कृतवान् नृपा घण्टासुनेन नासभ्य कवत्यस्सिन्धर्वावृता धनुजया सिंहण्टानां नादापूरतिमुखा निनादै विष्णुः काली जिघे विस्तानिवेशरा ततो देवं सर्वदेवानि संगिता ततो देवी सिंहस्ता काली शौर्यस्वरिवारिता एतस्मिन् भूमा च विनाशाय दुरादिशिं ब्रह्मशक्ता सुव्रातितं नाम वीर्याबलान्विता ब्रह्मोऽस्तु गुह्य विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्यो निष्कम्य ततो चण्डिकायु यस्य देवस्य यद्रुतं यथा भूषणवाहनं तथैवाता शिवतं देवं हंसयुक्ता जुरावृता हंसयुक्ता विनानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलो अयता ब्राह्मणा शक्ति ब्राह्मणी समधीयते महेश्वरी विखारुणा त्रिशूलावरधारिणी महावीवालला प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तहस्ता च मयूर वरवाहना त्वं भ्रवातो दैत्यनाथ तथा स्वाविता यथैव वैष्णवी शक्ति च गरुडोपरि संसिता शङ्खचक्रगदासामिचक्रवाहिस्वाभितो यज्ञवारः मातुलं रूपं च अभिवृतो हरे भक्तिसौप्यावतत्र वाराहिमिवृतं नुत नरसिंहे नरसिंहस्य बिभ्रति सादृशा वपु प्राप्तं तत्तस्वाचिता शक्तिशिखा विषयभूता हन्तविद्यादिशीघ्रा च प्रकृत्या सन्नचण्डिका ततो देवी शिरजस्थो निष्कान्ता भीषणा चण्डिका सन्धिरुद्रग्धा सुसंविता अतो तस्मिन् महावीर्यं सर्वदेवानुसन्धिता साक्षात् धूम्रजटिला सा मिशाना पराजिता दूतं तागच्छ भगवानापासान्नुसुम्भयो ब्रूहि सुम्मनुसुम्भच्चा दानवातीयमावृतो ये चन्ये दानवतस्य युद्धया समुपस्थिता त्रैलोक्यामिन्द्रो लभतं देवा सन्तोर्विभुजा युवं प्रायतं पातालं यादिशि विच्छिता बलापावृमहत्ता कवत्यस्सिन्देव सर्वदा अस्मिन्ता विहता देवं सर्वदेवानुसन्धिता महर्षा पूरिता जगद्वित्वता निकत्यानि स्थिता तथा प्रथमेवाग्रे सर्वशक्ति निर्विष्टिवि वर्षा दामासं देवी मारन्वाव्रया सा चातानि प्रहस्तेनावानशूल्ना सुव्यापिता छिच्छेदालीलियाध्वानर्कवैत्य सिन्वावि तस्य ग्रातस्तकाली च शूलपाति विदारिता खट्वङ्गा विपोदे नासारतीन् कुरुभात्यदा कवण्डोलोजुला प्रेता कवत्यस्सन्हुतासना ब्रह्माणि चक्रहोतुष्टा हेनेन स्वावती महेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दत्तजघ्नान कौमारिता शक्त्या स कोविदा ऐन्धिकुलेष्णपातेन हतः सौदैत्यदानवा हेतुवेदारिता पृथिव्या
सिन्धुभे सदा तुन्न प्राणवीरश्चादष्टकालिर्वाचिता वाराहमूर्त्यान्नता चक्रेण विराविता ततो सिंहा ततो देवान् सर्वदेवान् संगिता तथैकशतं भूपा देवदेवान् संदिता कैवीनाद्भुतां देवान् सर्वदेवान् संगिता नेकैर्नायेतृमातृकृपा देवान् सर्वदेशस्वा तथा इति मातृगणा क्रुद्धं मार्दयन्तं महासुरा दृष्ट्वा मुक्तकृपातेन सुरदेव सैनिका पालयानान् प्राधिष्ठं कर्वदेवान् संगिता रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ परतस्य शरीरता समुत्पत्तिमेदिन्नं सत्त्वपादिन्वासरा योधे चामहागानिष्गवतिन् महासुरा ऐन्द्रियगिरिसमारूढा वैष्णवी गरुडासना तत्र देवासतो देवान् सर्वदेवानुसन्निधा अस्मिन् पातोत्तरा देवान् सर्वदेवानुतन्द वैष्णवी समरे चैन्ना चक्रवेन जिग्वादजा गदया ताण्डवासितम् ऐन्द्रियगिरिसमारूढ वैष्णवी चक्रभिन्नस्याचक्रवतस्यन्वावितै सहस्रातो जगद्व्याप्तं तत्प्राणै महाशुनय शक्त्या जघानि कौमारी वायराही तथासिना महेश्वरी त्रिशूलाना रक्तबैजन् महाशुन सा चापि गदया सत्या सर्व एनान्वावता आतुर्कोपास्तमाविष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्य हातस्य बहुधा सर्वशक्ति स्वावृति पातयोन्मयदुक्ते सुवन्तेष्टन् महासुरा उवाच काली चामुण्डै विस्तरणं वदनां कुरु मक्षसन्नासवातीर्थं शक्तिबीजन् महासुरा रक्तबिन्दुरप्रतिक्षमता शक्तरेणान्वेगिना भाषन्ति चराराणे तुवत्तिष्ठन् भावत एवमेषा क्षयं दत्यातिश्रक्तो न गमिष्यति एवमेतत् सदा देवं सर्वकामार्थिसिद्धिदा मुखेन समुद्गता कवतिश्चिन्वेतते अस्मिन् पातोत्तरा देवं सर्वदेवान् संगिता मुखे समुद्गता यत्त्वा समतेरनुसमिता हत तस्य च चामुण्डा पापो तस्यात् शोणिता देवी शूलेन वज्रेणावली राजिस्मादिवि जगान रक्तबीजं ता चामुण्डी शापशोभिता शापपात महापृष्ठेर्वतस्यन् समाहिता रतिस्या महीपाला रक्तबीजो महाशुरा ततष्टुहर्वतां देवां क्रवश्चेन्वानिपा तेस्तमातृगणो जातो नवस्सुण्डो नरोद्धता इति मार्कण्डेयपुराणे सामन्के मन्वन्तरे देवी महात्रम्मो अष्टमोऽध्यायः। नमश्चण्डिकायै। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशोचवरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्र मरधाम्बिकेशं वनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमिख्यानं भगवान् भवतं मम दिव्याश्रितमाहतम्यं रक्तबीजावदाश्रितं भूय विच्छाद्वतं श्रोहं श्रोत्रक्ते निपादिते चकार शुम्भो यत्कम्मा निशुम्भे जातिशोभिनं हरो तस्मिन् चकारे ऋषिरुवाच चकारकोपमातुरं रक्तबीजे निपादिते शुम्भासुरो न शुम्भस्याहेव तस्यन्न चाहवे हन्यमानं महाशन्यं तैलोक्यामर्षमुद्भवा अभ्यधावत् ततो मुख्योत्तरा शुम्भेशसेनया तस्य ग्रातश्चता पृष्ठः पार्श्वयोऽसौ महाशरा सदृष्टो पुष्टो गोर्धं च सुवदेशिन् महायो अजगामा महावीर्य शुम्भोऽपि सुलाभृता निहन्तुं चण्डिका कोपत्कृत्वा युद्धमार्तवी ततो सुयुद्ध्यात्मतो देवा शुम्भन शुम्भयो सर्वर्षमति योग्रं योतयो सन्न पार्वतो पिच्छेन्दाजर्वादेनं सर्वतेषानि सौवृत खण्डयामास चङ्गेषु रस्त्रिलेतुर्महासुरा निशुम्भो निशं खड्गा चर्ममादिजा प्रभां खण्डमासानि मूर्धन्ये सिंहनातिर्महानुता खण्डिते वाहने देवी प्रेरणा समानमुत्तमं निशुम्भयासु शिच्छेदा चर्मस्कंकाधि चण्डिका छिन्ने धर्माणि कर्कण्यसुवत्तिष्ठन् महासुरा अक्यतासौ तथो देवीं सर्वदेवानुसन्धिता सोऽपि दिव्याकृता दिव्यङ्क्रियाता निवेशया तथा परसु हेमन्तं कर्वदेवानुसंगिता सिंहकान्तेन मूर्धेन कवाते सन्न सर्वदा अस्मिन् पाते सुभादेवं सर्वदेवानुसन्धिता तस्मिन् पातिर्भूमौ च निशुम्भो भीमि विक्रमे भार्यन्ते क्रुद्धं च प्रवन्तिं हन्तुमिक्रम संविदा भामयन्ता समालोक्याकवतिश्चिन्न धावति शब्दसाधं स चापिं ता दुग्धभाचिन्वामृता तमस्य दैत्यसैन्यानां तेजोवादिज्वाभिना तथा सिंहो महानादादित्यसेवा निशावृति पुरायामास गगनं च तथैव ता दिशो दिशं ततः काले समुद्बुद्ध्या गगनं ताश्रमान्विता करभ्यं तन्निनादेनार्कवत्यस्सिन्दातिरोहिति हट्ट हट्ट महाशिवं सुदूती चकारः चाशिब्धै सुभाति जय शुम्भाकोपार्पुरायुवते दुरात्माने तिष्ठे दीर्घवतस्यन्वाङ्कुता ततो ग्रीवाक्यभौतिजं देवल्योऽसं संचिता सुवेन नगर शक्ति चामृत्वा ज्वालाति भीषणा अयन्तीं चण्डिका बद्धोनिरातन्वहुत सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयत्र निर्गतिदासतो घोरो निवत्यस्सिन्धिपातते शुम्भा शुम्भकृतो देवी शिवतस्सिन्दावते शिच्छेदासासुरेषु सदस्या सहस्रशः तदा सा चण्डिका क्रुद्धासुलेन जिघासतं सा च धूम्रजटिलनितिमतेमा निषन्दिता ततो शुम्भनिशुम्भो न हर्वतश्चण्डभावते काकी देव चा देव सर्वदेवा निषन्दिता तस्य निष्कामतो देवा प्रभस्यावश्यत्रवा सच्छेदा खड्गेन
तरोत सिन्धभूमि तथा सिंहाख्रवाद्गोलम तु सदिष्टम शिरोधरम असुरभ्यातकाली शिवदूती तथा कौमारी शक्ति निर्भिषा के सिद्धिवंत्र महासुरा ब्रह्माणी मंत्रपूतेन तयोनन्य निराकृता महेश्री त्रिशूलेन भिन्ना तुस्तन्नता परे वाराही टुंड घातेन केचित् तुन्न कृता मुभि खंडम संगम च चक्रेण वैष्णवा दानवा कृता वज्रेण चित्ता देवं तथा परे केचित् दिवा तथा कवत्य सिंधरापदा अच्छिदाशा परे काली शिवदूती मृगाधिपहि ओम इति मार्कंडे पुराणे श्रावण के मनवंतरे देवी माते नवमो अध्याय नमश्चंडिकायै। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवहिनी नेत्रं धनुसरयुक्ताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओं ऋषिरुवाच निशुम्भनिहतं दृष्ट्वा भातरं प्रणतास्मितां हन्यमानं बलं चैव शुम्भाक्रुद्धो प्रभाद्विषा बलावादे प्ररोतिष्ठ तं दुर्गे गर्वामहम् अन्ये सम्बलमाश्रित्य युद्धवेज्ञातिशोभिनं ततो देवी ततो दिव्युवाच एकैवाहं जगतश्च द्वितीया काममावरा पश्यातं दृष्टमावेतं विना सन्तोमतिद्वया तथा समस्तथा दिव्य ब्राह्मणी प्रामुख्यालयं तस्य दिव्यास्तनो दिव्या कवतस्य तथाम्बिका दिव्य उवाच अहं विभूत्यया बाहुभिराजातरोधिता तत्र संगृह्य मे शुद्धं तिष्ठतो स्थिरो भवा ऋषिरुवाच तथा प्रवर्तते युद्धं दिव्या शुम्भस्य शोभने पश्चातं सर्वदेवानां मुसूनां तथाम्बिका सर्वर्षे शिते सव्यद्गवत्यस्सन्ददारुणै तयो युद्धाभिबुध्यतं सर्वलोकभयङ्करं दिव्यास्तानि शतासो मुमुचो नाथिताम्बिका पञ्जातानि तश्चिन्नार्कवैसङ्गाति कर्तिभिः मुक्तानि तेन शस्त्राणि दिव्यानि महेश्वरी भवञ्जालीलचोद्रव्यां कवतिस्सन्ददाभिः तथा सरस्वती देवी मच्छाद्यसरोत्सुरा सापि सौतोत्कता देवी क्षुण्णशिन्नान्नशोघसु छिन्नेदानुक्षदैत्येन्द्रा सवतिस्सिन्ददायते छिच्छेदा देवी चक्रेण तव सन्नाकरे स्थितं ता खड्गमूदुरया सनचन्द्रं च महादुतम् अवधावत्तदा देवी दैत्यनामतिर्वेस्तरा तस्य पादत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते शवातिष्ठं चण्डिके सातिसाविदं ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसा अभूं निर्वतो तस्मिन् गन्धर्वो सलिलं जगु तवातष्टेन्नतो मध्यं नानुतश्चरो गणा अयो पुण्डश्चत्रासुरो बुद्धिदिवाकरा जलजा शान्ता च दिवसेन्ना महेश्वरा इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दशमो अध्यायः। नमः चण्डिकायै। ओं बालरविद्युतिमिण्डुकिरीटां तुङ्गकुचाङ्नयनत्रययुक्तां स्मरे मुखीं वरदाङ्कुशे पाशाभीतिकरं प्रभजे भुवनेशिम्। ओं ऋषिरुवाच दिव्याहते तत्र महाशुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावग्निपुरोगमस्तां कत्यायनीं तोष्टुप्रभ्राश्चितापाभिकासुतासे बभुतानुताशा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माते जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महिस्वरूपेण यथा सितासि आपस्वरूपस्थितरात्वेतं तवैस्यते कुर्नुद्रातिवीर्ये तं वैष्णवी शक्तिरत्नवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्तं वै प्रसन्ना भूमिक्तिहेतु विद्या समस्ततोदा देवी वेद्या स्त्रिया समस्त सकला जगता सदोत सर्वभूत यदा देवी सर्वभुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता तुता देवदं प्रवतस्सुन्दरमोक्तया सर्वस्या बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गा प्रवर्गते देवी नारायणी नमोस्तुते कालाकष्टादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वासपारुतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्ता पवित्राय अर्परायणे हरवर्षति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्ता विना नास्ते ब्राह्मणी रूपधारिणी कौशाम्बाचारिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलाचन्द्रहिधरे महावृका विवाहिनी महेश्वरीस्तरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुर्कुट्टुरे वृत्तिं महाशक्ति धरे धरे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंखचक्र गदा शक्ति त्वद्वायुमावृते प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी
नारायणी नमोस्तुते गृहतो चाग्रे चक्रे वसुन्धे वसुन्धरे वाराहरूपिणे श्रीवे नारायणी नमोस्तुते सिंहरूपे ग्रवादे दहन्तु दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यात्राहिते देवी नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रे नोज्ज्वले वित्तप्राणहरे चन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदीतिस्वरूपेण दैत्येन्द्रहावले घोररूपमहारावे नारायणी नमोस्तुते दष्टकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चण्डमुण्डमथने देवी नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिर्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरो भूतिवापरिधामसि नेते त्वं प्रति देशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते पातते वदनं सौम्या त्रैलोक्यन्न भूषदं पातु ना सर्वमेतभ्यः कत्यायिनी नमोस्तुते ज्वालाकराल मृत्युस्जं कृपातिस्सन्दसोदरं त्रिशूलं पातु नो वेत्रे भद्रकाली नमोस्तुते हिन्यस्ति सोद्वा देवं सर्वलोकानुसन्धिता सुराते हृतं देवं सर्वदेवानुसन्धिता एकते कथितं भूपा देवी माहात्म्योत्तम पुनरप्यातिरोरन्द्यारूपेण पृथिवीतले अवतीर्या हनिष्यामि वप्रचिन्तन्तु दानवान् भक्षन्तान् तानुग्रान् वप्रचिन्तान् महासना रक्तदन्ता भविष्यन्ति दादिमी कुसुमोपमा ततो मां देवतः सर्गे मत्तलोके च मानवा स्तुवन्तो वरिष्यामि सततं रक्तदन्तिका भूयच्छंसा कृतं जैवैकवत्यश्चन्द्रमानिषि मुनिभिः स्तुता भूमो सुमत्यश्चन्द्रवादिरा तथा सतेन नेत्राणां श्रीचन्द्रनिर्मुता कीर्तिश्चन्यमनुजा सा सिद्धिं चातुराजता ततो हामखिलं दोकाकवत्यश्चन्द्रभावसि भरिष्यामि सुरादिज्ञकवतस्य प्रणाधरे आकाम्बरेति विख्याति तदा संवेदुमाभवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गामाख्य महासुरा दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्च यदा भीमारूपं कृत्वा हिमाचले गच्छति वाचन्ति वीनो न चत्रकानुर्भावतः तदा मां मुनयः सर्वे तत्कृतान् मूर्तया भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रूढक्षतो लोक्ये महापादं करिष्यति तदाहं रामरं रूपं कृत्वा शक्येतु सप्रदा त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुर भ्रमरीति च महद्लोकवतश्चन्द्रतावते इत्थं यदा यदा बाधा दानवत्ता भविष्यति तदा तदा वर्तिष्यामि करिष्यामि कृपावता इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तादृशोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ विद्युद्दां समप्रभां मृगप्रतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्धस्ताभिराशेवितां हस्तैचक्रगदाशिखेटविशिखं चापं गुडं तर्जनीं विव्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। ॐ दिव्युवाच एभिः सुतैः समं नित्यं सोतियन्तो क्षमाहितः तस्यायां साकलं बाधानाशइष्टं रुवावृतं ततो देवं ध्रुवदेवानिघात्रं कीर्तिष्यामि वैद्यं बाधं शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैकतेशजा स्वयन्ते चैव नो भक्त्या ज्वलतेश्चन्नमुत्तमं नाते खां कृत्स्वतां देवा कृषद्दश्चन्नजापदा भविष्यातीन्दरिद्रायं सुकृते वाचिशाननं शत्रुतो नाभयं तस्यादाशतो वानराजतः तथा दष्टाकृतौ देवं दशसन्नन् भविष्यति तस्मन् वेत्ता कृतौ दिव्या प्रतिदिव्यं समाहितै ओसौ सर्गानशेषस्तु महामारी समुद्भवा तथा देवा तथा दिव्यं चोत्तदेवान् सदावता तत्र देवा पथा तेतन् सङ्गदीवातिदावता तदा नावामितो देवं सन्ददेवा निषन्दिता बलिप्रदाने पूजाया मग्निकार्यो महोत्सवे सर्वं देवा तथा मुच्चर्वं सग्रवेचता जनता वापि बलिपूजां तथा कृतं प्रतिक्षम्यमामिता दत्तावग्निहोमं तथा कृता शरत्काले महापूजा क्रियते या च वर्षिकी तस्यं व्रतञ्चोत्तम च भक्तिसिद्धं समाहिता सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन्धान्यासुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया श्रुत्वा सतैस्मदितं तथा चोन्नन्दाशुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान् रूपवा संशयं यन्तो कल्याणं चोपपद्यते अन्ते चाकुलं पूषं महात्म्यं सुभावितम् ओषितान्तिका शान्तिकर्माणि सर्वत्र तथा दुष्प्रदर्शने गावीडासु चोग्रासु महत्तस्यं समाविता बालग्राभीभूतानां बालानां सन्तिकारका संघेतभेदे च निर्णाना मैत्रीकरणमुत्तम दुर्वृत्तनाम शेषेण बलहानिकरापर राक्षसो भीतवीचासं पठाने द्वन्द्रासन सर्वमेतच्छतं निर्वसन्निधिकाकत वसोस्वरूप्यादुपश्च गन्धीतिवस्वावत विप्राणं भोजनैर्होमे सुवत्यस्सन्दिरावित अन्ये कापि वातेदं प्रदाने सस्वावित इतिर्मे क्रियते तस्मिन् दुरत्वैर्निर्मासुते सुतं हरति पापानि
तथारोग्यं प्रयच्छति तच्छं करोतु भूतेभ्यः जन्मानं कृततं मम युद्धे सुचरितं यन्मे कवत्यस्यन्ददेवता होतस्य तावता देवं सर्वदेवानुसन्निधा एततापादुशापापि सङ्ग्रामे चाभृतादुतः सर्वा बाधासु घोरासु वेदव्यादिनोपता अस्मरे शार्वता देदान् नरो बुच्चन्दुकाविता मम चौगतरा देव क्रमते वानिसन्निधा ऋषिरुवाच योक्त्या सा भवती चण्डी चण्डिका च निविक्रमा पश्यते कां देवानां ततो देवान्नधीयत तेऽपि देवासुता देवं सधीकारं तथा पुरा यज्ञभागाभुजा सर्वे शक्रवीनान्हुतार्दा तश्च देवस्य निहतो संवदेवापुतावत सङ्गैश्चैवासुता देवं सैव कालीमभावित महाकाल्यं महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव निर्वातुतामित स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले श्रीराम देवा सवत्यश्चन्द्विभावते एवमुदा पूजिता देवा पुष्पधूपाग्रभाजता राते पितृपुत्रश्चामति धर्मगतिर्वासवितमानि कण्डे पुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी महात्म्य द्वादशोऽमो अध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पाशाङ्कुशवराभीतिध्यारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतते कथितं भूपा देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावसा देवी धार्यतं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते विष्णुमायात्प्राविधा तया तथैव सौम्यस्या तथैवन्य विवेकिना मोहन्ते मोहितश्चैव मोहितन्ति चापरे तमुपाहि महाराजा शरणं सर्वमेश्वरी आराधिता सैव निर्णाणं भोगवश्यासुरापृता सर्वदेवासुता देवं सर्वदेवानि सन्ध्या मार्कण्डे उवाच इति तस्यावचा श्रुता श्रुता सा नराधिपा परिपत्या महाभागा तामतिं शशियाव्रतं विनिशुण्यत्वादिज्ञाराज्यपारिस्वेवचिता यगाहं सद्भूतस्तं पश्ये श्रीमहामुरे दर्शनात् विश्राम्यानन्दे पुल्य संसिता सा च जन्नाकवेतं न सुवतस्सन्दजापिना अपर्णा चक्रवे तस्या पुष्पधूपादिवङ्ग्रे निराहरौ यताहरौ तनस्माकौ समाहितौ तादुरस्तौ बलिश्चैव जगत्यस्सन् शोभितम् एवं समराधियोत्यं गवत्यस्सन् महात्मा परितुष्टा जगद्धाति प्रक्षम्प्रा चण्डिका दिव्योवाच यत्प्रवत्ते त्वया भूपा त्वयत्मनुपनन्दना भवत्ता प्रावृतं सर्वं परितुष्टा ददामित मार्कण्डे उवाच ततो वा प्रियो राज्यामन्वितस्सन्न जन्मनि अत्रैव चान्द्रजं राज्याशत्रुर्वावृता सोऽभिवेक्त्वा ततो ज्ञानं बभ्रेग्निवासन मानसा अमृता प्राति प्रज्ञा सा शिवतिश्चिन्द्राकरं दिव्योवाच स्वल्परोगावृतो निप्तं सा राज्यं साधुवावतं हत्ता निपुणमखिलं तत्रन्त भविष्यति मृतस्या भूया सप्यां जन्मदेवानि सन्दिदा एतस्मिन् क्वा किस्गतवशेन भूमि भविष्यति वात्सर्यचार्क्वा देवं सवतश्चन्द्वाचिता प्रवक्ष्यामि सिद्ध्येते तं ज्ञानं च ममिष्यति मार्कण्डे उवाच इति दत्त्वा ततो देवी यथाभिलषितं परम् अभ्रन्ता सद्यो सात्वमिकवत्यश्चन्द्रविता एवं देव्या परो लुब्धा श्रुता क्षात्रियाश्वा सुजगम्मा समस्तद्या सामृतिभ्यावृतामुनु एव दिव्या सला लुब्धा श्रुता क्षात्रिभ्यावृता सुजगम्मा समासते सामृति सावृतं ॐ क्लीं ॐ इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी माहात्म्य त्रयोदशे अध्यायः। नमः चण्डिकायै। श्रीसिद्धकुञ्जिकास्तोत्रं स्युवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं न रगलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वार्चनं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्योनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वंशं स्तम्भनुच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहं संलं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपण्डे नमस्ते मधुमर्दने नमः कैटभारण्डे नमस्ते महिषार्दने नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातने जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी शिष्टरूपायै ह्रीङ्काली प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपण्डे बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च यकारी वरदायनी विच्चे च व्यदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपणे
धां धीं धौं धौर्जटे पत्नी वां वीं वौं वागधेश्वरी क्रां क्रीं क्रों कालिका देवी शां सीं सुं मे शुम्भं कुरु हुं हुं हुंकाररूपण्डे जं जं जम्भनादनी भ्रां भ्रीं भ्रौं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं सं भीं दूं ऐं बीं हं छं धिज्जाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पौं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं केचरी तथा सां सीं सुं सप्तसती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुस्व मे इदं तो कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकाया देवी हीनां सप्तसतीं पठेत् नातस्य जायते सिद्धिरण्डेरोदनं यथा इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् महा भवान्याष्टकमस्तोत्रम् न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वेतिर्ममैवा गतिस्त्वं तमेका भवानी भवाब्धावपारे महादुःखभीरु पपातप्रकामी प्रलोभी प्रमन्तः कुसंसारपाश प्रबन्धसदाहं गतिस्त्वं तमेका भवानी न जानामि दानं न चाध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न चान्यासयोगं गतिस्त्वं तमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मार्गं गतिस्त्वं तमेकं भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदाशा कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदिष्टिः कुवाक्या प्रबन्धा सदाहं गतिस्त्वं तमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि जान्यान् सदाहं शरणे गतिस्त्वं तमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पार्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं तमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा संगवक्त्रः विपत्तो प्रविष्टः
प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी।